Okay, my dear students, let us start the transcription number 230. Be ready. 5 seconds. Start. Sir, as a teacher, I am pleased to note that the government have appointed an old teacher, Dr. Kothari, as the chairman of the University Grants Commission. We are proud of his scholarship and of his devotion to duty, and we feel that under his able guidance, the University Grants Commission would be able to render increasing service to the cause of education in this country. I am glad to know from the Education Minister that the University Grants Commission and the Education Ministry are functioning harmoniously, but I wish to point out that in the last report of the University Grants Commission, the Commission pointed out certain difficulties in carrying out its responsibilities. I do not know what steps were taken afterwards to remove these difficulties and to ensure to the University Grants Commission autonomy which is its due. Sir, we are holding conferences of the ministers of education and conferences of the vice chancellors of the universities, and I feel that we should also hold conferences of the chairmen of the university grants commissions of various states. In spite of that jurisdiction, we are holding conferences of vice chancellors of universities, and we are dealing with various educational questions. If there are no university grants commissions in certain states and if they are not functioning properly, it is the duty of the education minister at the center to deal with that problem also in the conference of the ministers of education of the various states if they find some difficulty in having a conference of the chairmen of the university grants commissions of the various states. I do submit that the universities are not functioning as autonomously as perhaps the education minister wished them to function. I know that in the last report of the University Grants Commission, it was said that freedom is vital to good education and democracy, and I know that our education minister today also repeated the same idea in other words. But I am afraid that interference in university education is rather increasing. The bureaucratic spirit is tending to dominate the university life much more than it did when we were under the British regime. Universities in certain states are tending to be instruments of the government's policies. Intra-party conflicts at government level and often conflicts between the state governments and the union government in certain cases cause difficulties in the administration. I do not know that for the present state of affairs, teachers and students are to an extent responsible, but I beg to submit that the higher authorities are in no way less responsible for the present state of affairs in our universities.
Without mentioning names, we know that proper care is not taken in the appointment of vice chancellors. If the system of election has failed, selection by government has proved no better so far as the cries of the vice chancellors are concerned. In many universities, the directors of education are chosen as vice chancellors, and I have reason to believe that their selection is in general resented by the professors of the universities concerned. I do submit that some of the directors of education might be fit even to be in charge of universities, but I do feel that if the government wish that persons in charge of secondary education should also take interest in university education, it is proper to appoint them as university professors before they are appointed as vice chancellors of universities. I have in mind a person like Dr. Amarnath Jha, who belonged to the Provincial Education Service. He served as a university professor, had experience of university education, and then when he became the vice chancellor of the university, he discharged his duties as vice chancellor admirably well. I wish to point out that personal character, wide human sympathy, interest and understanding of university education, capacity for leadership, faith in the democratic ideals, reputation for learning, and confidence of the authorities are absolutely necessary in a good vice chancellor, and proper care should be taken in devising ways and means for selecting proper persons as vice chancellors of universities. I welcome the new pay scales of teachers of the central universities. I do wish to point out that there is a great need for the amalgamation of the grades of lecturers and readers. Most of the teacher conflicts are due to these two grades of lecturers and readers, and greater harmony will prevail among teachers in case the two grades subject to certain efficiency bar are amalgamated. I do feel that there is no marked difference in the abilities of teachers of central and state universities, and there is need for equalization of the pay of teachers of state universities. Whoever may be responsible for the difference in pay, the country would suffer if there is no equalization of pay, because disaffection would continue, and this will tend to spoil the university life and standards. I wish to point out that some system of transfers should be encouraged by the University Grants Commission. Stop. लास्ट लाइन आपको सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन के डिफिकल्ट वर्ड्स। जब भी ट्रांसक्रिप्शन आप कंप्लीट करते हो, डिफिकल्ट वर्ड्स को चाहे आप पहले करना चाहते हो चाहे बाद में, फर्स्ट वैसे एज पर रूल पहले लिख के देखा करो कि कितना आप कमांड ले सकते हो, पिकअप कर सकते हो वर्ड्स को, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स की प्रैक्टिस ऐसे करो कि व्हेनेवर द वर्ड विल बी रिपीटेड इन योर लाइफ एवर,
So it should be written within no minute, no second, इवन नो सेकेंड, यानी कि इतना ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि वो आपके माइंड में छप जाए, ठीक है। सो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो देखो आई एम प्लीज्ड है, इकट्ठा कर सकते हैं तीनों वर्ड को, स्कॉलरशिप है, डिवोशन को ओ का वॉवल डाल के रखो, शन में हमेशा मैं आपको कहती हूँ बिंदी डाल के रखो, वो डॉट आपको शन पढ़ाएगा, नहीं तो वी का हुक बन सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप समझो, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जब भी वो पूरा आपको देता है तो देयर इज नो नीड टू राइट इट, फिर अब जरूरी नहीं है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टू राइट द फुल वर्ड, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मेरे को आउटलाइन पूरी लिखनी है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन व्हाट कैन यू डू, यू कैन राइट यूजीसी, यूजीसी को एनसर्कल कर लो, इफ इट टेक्स lesser time than this university grants commission outline, ठीक है। अगर आपका समय कम लगता है तो यूजीसी को लिखो, एंड सर्कल कर लो। इसको सर्कल करने से क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मुझे जो डिक्टेटर ने बोला है दैट इज इन फुल फॉर्म, नॉट इन एक्रोनिम। अगर उसने सिर्फ यूजीसी बोला है तो यूजीसी तो तुम लिख ही सकते हो, समझ गए। तो यूजीसी लिखोगे सिंपल विदाउट सर्कल, इट मींस इट इज इन एक्रोनिम फॉर्म। अगर आप उसको सर्कल दे रहे हो इट मींस इट इज इन फुल फॉर्म। तो ये आपका दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। रेंडर है आई एम ग्लैड दैट, आई एम ग्लैड टू नो दैट, ठीक है, दैट भी जुड़ सकता है साथ में। एजुकेशन मिनिस्ट्री में एम नीचे डाल दो, एजुकेशन मिनिस्टर में एम के साथ एसटी की चाप जरूर देनी है, नहीं तो एजुकेशन में भी एसटी की चाप दे सकते हो। मेन क्या है, प्रोवाइडेड दैट आपको लाइंस जरूर डालनी है बिकॉज ऑल दीज आर द कैपिटल इन फॉर्म। ज्यूरिसडिक्शन को शॉर्ट फॉर्म है, फंक्शन हमेशा बिलो द लाइन शन डाल के कर दो, फंक्शनिंग आ जाए तो इनकी बिंदी पीछे आ जाती है। एट द सेंटर यू शुड नो कि सेंटर हमेशा बड़ा है। टू डील विद द ऑटोनोमसली, मैं आपको ये आउटलाइन की प्रिपरेशन करनी है, स्पेलिंग याद करने हैं। वाइटल, आई एम अफ्रेड, दैट भी जोड़ सकते हो बीच में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ जाता है तो केशन साथ में जोड़ सकते हो। इन एनी वर्ड यू कैन यूज एजुकेशन, एजुकेशन के लिए के और शन डाल दो, एजुकेशन उसके साथ ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक की फुल आउटलाइन लिखो। मच मोर देन में आप ये देख रहे हैं तीन वर्ड इकट्ठे आ सकते हैं। ब्रिटिश रिजीम में ब्री छोटा करके, रिजीम बड़ा, आई बैक टू सबमिट इकट्ठा कर सकते हैं। हायर अथॉरिटीज में ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने बताया, और इन अदर फॉर्म में अगर आप पूरा एच लंबा डाल दोगे तो उसमें अथॉरिटीज का कट नहीं आ सकता। हायर में जब आर डालते हो ओनली देन अथॉरिटीज का कट आ सकता है, ठीक है। तो इसकी अच्छे से तैयारी करिए। अब मैं आपको नेक्स्ट डिक्टेशन दूंगी और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू सो मच।